Welcome back, viewers. Today, the second half, we're going to talk about the pregnant women which are recovered from COVID 19. Apart from the precaution measures, what else they can do? For this, we'll try to contact with one of the renowned doctor of Pakistan from Capital Hospital Islamabad, Dr. Rabia Kawal. She's a gynecologist. She came to my program for a few times. Let me talk to Dr. Rabia. Good evening, Dr. Rabia. Good evening, thank you. Dr. Rabia, good evening. Can you hear me? Yes, I can hear you. Good evening, Yes. thank you. Dr. Rabia, another milestone, the 100 days of COVID 19 is over. I'm going to ask the question which is related to the pregnant women. Pregnant women after recovering from COVID 19, apart from precautionary measures, what else they can do? If you can briefly describe this thing for me, for the viewers. Yes. Actually, after we discharge the patients who recovered from the COVID-19, we should keep them in isolation at least for 14 days. Because in this period, upper respiratory tract gets clear from the viral load. But in the GIT tract, the gastrointestinal symptom, this tract still have the viruses and can have the possibility for the transmission of disease from the fecal oral route. And there is shedding of viruses from the GIT tract. So we should be very careful after discharge these recovered patients, and we should counsel the patients and their attendants in this scenario. And I think there is no need for the usage of the face mask in this period. And the second thing that we can use the immune boosting diet. Right. Because with the help of this diet, one can enhance the immune function. Right. Because without enough of the essential nutrients, immune system can deteriorate. And all people mostly know that COVID is basically the respiratory system infection. Right. So different international researches shows that vitamin A, C, D, and some other minerals. Dr. the zinc Rabia, and- if you can describe same thing in Urdu to the viewers, the women, they live in the rural areas and the people, they can understand Urdu really well. So I think that's going to be worthy stuff for them. अगर आप इसको उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहें तो औरतें जो आप सुनना चाहें वो इसको सुन सकती हैं जी प्लीज. राइट. एक्चुअली जब एक पेशेंट है वो हमारे पास एडमिट होते हैं कोविड-19 के और वो रिकवर होके घर चले जाते हैं, उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, वो घर चले जाते हैं, तो 14 डेज की आइसोलेशन उनके घर में बहुत जरूरी है सब खवातीन के लिए. ठीक. उसमें ये होता है कि जीआईटी होता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक. जिसमें बेसिकली हमारा स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, ऊपर सही. जो हमारी सांस की नाली के जरिए जो हमारा ये वायरस गया होता है वो तो क्लियर हो जाता है. ठीक. मगर ये हमारी फीसेस में बड़े पखाने के थ्रू जा रहा है. डॉक्टर राबे, एक दिलचस्प बात आपसे मैंने पूछनी है. आजकल फ्रूट बहुत महंगा हो गया है, हर बंदा हकीम बना हुआ है, व्हाट्सएप का हकीम बना हुआ है. कोई कहता है जी चीकू खा लो, कोई कहता है जी आलू बुखारा खा लो, कोई कहता है जी चेरी खा लो. चेरी का डब्बा 350 रुपये किलो हो गया, मैंने खुद खरीदा यार 350 रुपये का. अच्छा, फिर कोई कहता है जी वो मिल्क शेक पियो. मुझे ये बताया कि फ्रूट में इम्यूनिटी तो होती है, बट जो लोग व्हाट्सएप के डॉक्टर्स बन चुके हैं, आई थिंक इट इज इंडीजियस और आई थिंक इस खतरनाक लोगों के लिए. क्या ख्याल है आपका इस बारे में? हाँ देखिए, ये बहुत एक बिल्कुल सिग्निफिकेंट चीज़ है, बड़ी ज़रूरी एक चीज़ है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, आजकल जो मौसम है उसमें मैक्सिमम हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं, इस तरह का मौसम है. और ये जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश जूसेस हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम ये वाइटामिन और मिनरल्स हासिल कर सकते हैं. ठीक. जिस तरह अगर विटामिन ए, सी और डी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, और सी आपको पता है जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे विटामिन सी की. डॉक्टर राबिया, अगला सवाल आपसे मेरा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉरी बेग योर पार्डन व्यूअर्स, ये आप लोगों के लिए भी जो मैं अगला सवाल पूछना चाह रहा हूं, बराए मेहरबानी इसको गौर से सुने और इस पे अमल करें. डॉक्टर राबिया, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोना आस्क इज द टोडलर्स आर द कैरियर ऑफ कोविड-19. ये जो नन्हे बच्चे हैं, क्या ये कैरियर है कोविड-19 के? Actually, I want to tell you one thing.
First, toddlers are those babies who have their age range from 12 to 48 months. And basically, these जीवन babies are not. मैं the carriers. नन्हे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो छोटे बच्चे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, छोटे अच्छा। बच्चे जो हैं वो basically infants have the age of 1 year. These are the infants. So these small babies, whether they are infants or they are the toddlers, they are not the carriers, अच्छा, right? Right. Because the ACE2 receptors are not present in this age group, and viruses can enter through our Right. body through these receptors. okay, So these receptors are not, so these babies are not the carriers because Right. the absence of these receptors in these babies. Right. But these babies can be symptomatic. They can have the mild to the moderate symptoms, and sometimes they can present with a severity of the disease too. And in some cases, the pediatric inflammatory multi-system organ disease also presents in these babies. So we should be very careful for these babies and for the exposure of these babies in the Ji. crowded places. And, like this, we can control the transmission of disease in babies too. But these are not the carriers. Okay. Right. डॉक्टर राबिया, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल थॉट्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राबिया कंवल, आपकी जो बातें हैं वो उन लोगों तक भी पहुंच गई, उन ख्वातीन तक पहुंच गई जो इस चीज से होके गुजर चुकी हुई हैं। लुक आफ्टर योरसेल्फ, look after your loved ones, because you are the front warriors of COVID-19. Thank you very much. Have a nice weekend. Right. Thank Okay, viewers, she was Dr. Rabia Kanwal, one of the renowned gynecologists from Capital Hospital, Islamabad. I'm going to bring Dr. Farhan again to the topic which we were discussing before that we went to the break. Dr. Farhan did a research on COVID-19 and published a journal. तो चलते इनसे पूछते हैं कि उसके बारे में क्या चीज़ है और वो आपको कहाँ से आपको उसके बारे में पता चल सकता है और कहाँ पर पढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर फरहान प्लीज। Basically, my paper published on clinical impacts अच्छा। of a coronavirus on different organs of the body. अच्छा। Basically, I assess or review the different knowledge Right. and then categorize these. That's a COVID-19 basically produce effects on the brain ठीक। in the form of a meningitis, गर्दन तोड़ बुखार, अच्छा। in the form of a drowsiness, Right. or in the form of sometime fits like a features. So then this involve डॉक्टर साहब lungs. एक चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त कभी दिमाग में आई है। Yes. व्यूअर्स, अभी ब्रेक में जाने से पहले मेरे बड़े प्यारे बड़े मोहसिन कैमरामैन ने इतना मासूमाना सवाल मुझसे पूछा है, वो मैं उस टाइम तो खैर मैं इसको जवाब नहीं दे सका, तो डॉक्टर साहब से अब पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझसे पता क्या सवाल पूछा, जी शायद आपने भी सुना हो। उन्होंने पूछा ये बता दें कोविड-19 बैक्टीरिया या वायरस? जी actually there is some या वो कह रहे हैं जरासीम है या वायरस, ये बता दें। yes basically coronavirus, just the name shows coronavirus. वायरस It is a virus basically, and this belongs to भाई सुन लिया? ओके, and this belongs to a coronaviridae family. ठीक, This is a group of viruses, राइट, and first time this virus diagnosed in 1960 in a monkey, and that transmitted. डॉक्टर फरहान explain again, Yes. speak in explain the people of Pakistan in Urdu so they can understand where this interesting stuff you're going to talk right now. Yes, please. जो कोरोना वायरस है ये एक वायरसेस का ग्रुप है, इसकी एक फैमिली है। अच्छा। आप समझिए। और सबसे पहले यानी जब वही दादा चाचा ताया जी सारे। जी अच्छा, ऐसे अच्छा, ही अच्छा, है। अच्छा। ये सबसे पहले 1960 में बंदरों से इंसान में ट्रांसफर हुआ था। इसका जो सबसे पहला वायरस आया था, Right. तो उस वक्त ये जो वायरस थे, वायरसेस जब ह्यूमन में आए, इंसानों में ट्रांसफर हुए, तो ये सिर्फ फ्लू करते थे। हल्का सा फ्लू हुआ, गला खराब हुआ, खांसी हुई, वो जीका शीका जो थे, जीका फ्लू 3-4-5 दिन में ये Swine ठीक flu, हो। जी ठीक। वो स्वाइन इज डिफरेंट, अच्छा, अच्छा, उसी अच्छा। की टाइप आगे बात अच्छा, में ठीक करता है, हूँ। ठीक है। ये 3-4 दिन में ठीक हो जाता था ठीक। और ये पूरी दुनिया में होता था और इसको बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई जाती, ये तो हल्की सी बीमारी ठीक हो है, गया। ये वैसी ठीक है। उसके बाद इसी ग्रुप का एक वायरस आया 2003 तीन में जी, Yes. जिसे हम कहते हैं SARS-1। SARS-1 and this is SARS-2. यस, Viewers, SARS-1 2003 में हमला कर चुका हुआ है, लेकिन उससे अमवात ज्यादा नहीं हुई,
लेकिन ठीक 17 या 16 साल 2019 में ही आया ना, तो 16 साल लगभग हो गए। 16 साल के बाद इसी के दूसरी जोड़ी SARS-2 आ चुका हुआ है। जी, जी आप समझ रहे हैं, वो उसका भाई था, ये उसका दूसरा भाई आ जी गया। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। SARS, दैट्स लेबल एज ए SARS-1, जी। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम टाइप 1। टाइप 1। ये कोरोना का फैमिली का एक मेंबर है। जी कोरोना की जो वायरसेस है ना, उनकी शक्ल के ऊपर स्पाइक्स बने हुए हैं। दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइक्स ऑन द सरफेस ऑन द कोरोना। So that time the SARS-1 is was a lethal virus, and the number of the deaths was reported at that time, and that was also diagnosed from the China and spread in the surrounding countries. Right. But this was the transmission of disease was not a very highly contagious. that's right. But the SARS-2, this is the COVID-19, that's a severe acute respiratory. It is this is severe. a highly contagious, that's It is. transmitted from one person to another so quickly. Right. So this is the lethal, but the mortality with this type 2 is less. Mortality with type 1 is very high. That was more reported at that time. Okay. But that virus was controlled. Was controlled, but it is uncontrollable. But this is still in process. Still in process. Yeah, we So can say. another virus. Dr. Farhan, can you please tell the viewers, Dr. Farhan published a journal on the research of COVID-19. So we're going to ask them where you can see and assess. Dr. Farhan, can you please tell the viewers, वो कहाँ पर आपके बारे में इसकी You can मालूमात पढ़ सकते हैं? search through a Google. Okay. Just type a novel coronavirus by Dr. Farhan. Students of paramedical staff, anyone, they want to go and search about on Google, write novel coronavirus by Dr. Farhan, और उसके अंदर आप इनके बारे में, इस रिसर्च के बारे में पढ़ सकते हैं तफसील से। मेरा डॉक्टर फरहान के साथ लगभग चौथा पांचवा प्रोग्राम है और हमने उन टॉपिक्स को डील कर लिया, हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर टेस्टिंग किट्स हो गई हैं, इनमें वैक्सीनेशन या जो दवाइयाँ इसमें यूज़ हो सकती हैं, हमने वो उस पर डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके प्रिकॉशन में यूज़ कर सकते हैं, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। मास्क डिस्कस कर चुके हैं, सैनिटाइज़र डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर राबिया से हम काफ़ी चीज़ें पूछ चुके हुए हैं। तो हमने इस चीज़ को काफ़ी कवर कर लिया हुआ है। तो अगर आप इस चीज़ का पूरा मजमूआ सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर जाएँ, वहाँ पर टाइप करें नोवल कोरोना वायरस बाय डॉक्टर फरहान और आपके इसके बारे में पूरी कंप्लीट तस्वीर सामने आ जाएगी कि ये चीज़ है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके अंदर है क्या, ये किस तरह चल रहा है और इसके आगे जाके इसके क्या चीज़ें होंगी। सो प्लीज़ कीप इन माइंड नोवल कोरोना वायरस you have by Dr. Farhan. Ji. Yes. Please go ahead. You can see in the whole articles there is a different impacts when the criteria of discharge of the patient, That's right. the transmission mode of the transmission, Right. the mode of diagnosis, method Wow. of diagnosis, Wow. and what is the treatment management steps. That's right. So all things I have mentioned in this. Dr. Farhan, article. the last question I'm going to ask. You know, some rumors coming up nowadays, and I've seen on the newspaper as well, but I haven't seen the patient yet. I mean, I haven't talked, none of the patient have spoken to me about this, but I've read something. Viewers, couple of viewers, they called me and they asked Dr. Farhan that, you know, the blood clots happen in the body if the coronavirus affects. Might be is a threat to the heart attack or heart disease. Let me ask Dr. Farhan. मेरा ही पूछने का क्वेश्चन ये मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कुछ क्लॉट्स हो जाते हैं, क्या ये क्लॉट जो हैं अगर कोरोना वायरस ने आपको इफेक्ट किया है, कुछ क्लॉट अगर बनने हैं तो उस क्लॉट की वजह से आपको हार्ट की या दिल की बीमारियां कुछ हो सकती हैं? ये हम डॉक्टर फरहान से पूछेंगे। यस डॉक्टर। कोरोना वायरस डिजीज have serious effects on the blood circulation, on the blood, and disturb the different markers in the body. Right. Like one marker is the D dimer. Right. We assess the DIC means disseminated intravascular coagulation. That means that there is a clot formation can occur if D dimer disturbed or raised. There is the possibility of formation of clot in the body, like a clot in the brain,
that a stroke, falage, Okay. like a clot in the lungs, in the फेफड़ों में अगर बन जाता है तो जिसकी वजह से embolism उसे हम कहते हैं pulmonary embolism, and that's difficulty in breathing, Right. and then it attacks the heart. That's a myocardial infarction. Heart attack can occur. If it involves the kidneys, the kidney failure can occur. So you're trying to say the clots can be happened. Yes, clots can be happened. Okay. So we are using to prevent the clot formation anticoagulant therapy, and that is a Claxane, or that's the other type of medications after the discharge. For example, from- any person complain about the clots, right? So and he didn't want or she didn't want to go to the hospital. So how they going to treat themselves in the house? so patient cannot present with the features of clot, but that's there's the involvement of the organs, like in the form of the heart attack. Now, for example, if the patient went to do this, what you can say, complete pictures, Yes. CPECR, Yes. and on the ratio they said is the clots of the blood, and he or she is a proper fit person, no symptoms whatsoever, but the clot's still there in the chest. Yes. So if he or she need to go house, they want to do some medication by themselves, what they can do apart from the So precautions? when the patient is suffering from this disease, Yeah. so if it has a mild, because we divided the disease in the mild, moderate, severe and the critical. Okay. In the cases of mild to moderate, there is the less possibility of disturbance of the blood markers. Right. So D-dimer is basically a marker in the body that indicates there is a formation of clot can occur. Right. If it disturb or increase, Right. that indicate the possibility of clot formation can occur. Right. So we at the time of diagnosis, we are advised to patient to go for a test of D-dimers. Okay. And similarly, others are the C-reactive protein and the ferritin. So if D-dimers are on the higher side, then we start the anticoagulant therapy. If सो ओके अगर व्यूअर्स अगर आपने अपना टेस्ट करवाना है कि अगर क्लॉट वगैरह नहीं है तो उसको हम अगर वो जाएंगे लैब में तो उससे जाके कहेंगे डी टाइमर हमें टेस्ट करना है. yes, but in the cases of mild to moderate cases, the D-dimer in initial phase are normal. अच्छा. There is no need of anticoagulant in these patients. Okay. But so it is the patient needs are to consult with the authentic doctor. Right. So that they streamline these all the things, because if we in case of the self medication or a self investigation, there is a number of complications, because on the we can search Google, there the number of doctors are present, or in Yes. the social media there are unauthentic I doctors mean are WhatsApp there. doctors. WhatsApp doctors And are WhatsApp present. doctors, yes, that's So right. That's true. if any person or any patient have a symptoms or problem, then should discuss with authentic doctor. The advise that test which are need at that times, Right. according to situation. Right. So, but we are advise D-dimers or other tests in every patient of coronavirus to assess the severity of the disease and then start the anticoagulant therapy to prevent the clot formation in these patients. Right. So Alhamdulillah, that is the people are recovering That's right. because Yes. the treatment management plan is improving Yes. with passage of time. Viewers, before I go to the short break, let me explain you the last week or so, the real time of the world of the coronavirus cases, Pakistan's number getting decreased. It is a positive sign. Thanks for bid. Do some prayers, and Alhamdulillah, we will go with this thing. Obviously, it's a war, and the enemy is not been seen, but we will defeat it, inshallah. We'll go for a short break. After that, we're going to discuss more about the publication of Dr. Farhan, because I'm going to ask some couple of important questions after the short break. So take a break. Stay tuned. JNN. अस्सलाम वालेकुम।